बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंटीबायोटिक के लेक्चर की सीरीज में ये फिफ्थ लेक्चर है, कार्बापीनम्स एंड मोनोबैक्टम्स। कार्बापीनम्स और मोनोबैक्टम्स दोनों ये बीटा लैक्टम रिंग्स की अक़साम हैं। Carbapenems antibiotics are among the most broadly active antibiotics in use today। मतलब कि कार्बापीनम्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं। As such, they are often the last line of defense against many organisms that are resistant to other antimicrobial agents। कि ये लास्ट लाइन के मतलब बाकी एंटीबायोटिक अगर काम करना छोड़ दें तो हम कार्बापीनम को इस्तेमाल करते हैं। और कार्बापीनम्स के अवेलेबल जो कमर्शियली अवेलेबल टाइप्स हैं वो इमिपेनेम्स, मेरोपेनेम्स, एर्टापेनेम्स एंड डोरिपेनेम्स हैं। IMED। Structure of carbapenems. A beta-lactam ring is fused to 5-member ring with the variable side chains. The 5-member ring differs from the thiazolidine ring of the penicillin in two ways। कि जो बेसिक पेनिसिलिन का रिंग है तो उससे ये दो जगह पे डिफरेंट है। मिथाइल ग्रुप रिप्लेस सल्फर इन रिंग कंटेन डबल बॉन्ड। के मिथाइल ग्रुप आ जाता है इसमें और वो सल्फर को रिप्लेस कर देता है और डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है। अच्छा, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बापीनम्स। 3 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत अच्छे हैं। उसमें पोरीन्स रिलेटेड हैं। These molecules are quite small। जो कार्बापीनम्स हैं they are small and have charge characteristics that allow them to utilize special porins and the outer membrane of gram-negative bacteria to gain access to the PBB penicillin binding protein। कि मतलब ये चार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो पोरीन्स को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। Number 2, the structure of carbapenems makes them resistant to cleavage by most beta lactamases। जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये बीटा लैक्टेमेजेस को रेजिस्टेंट होते हैं। Third, the carbapenem have an affinity for PBP from various kinds of bacteria। कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया में जो PBP होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इन कार्बापीनम के उसके साथ अफिनिटी है, उसके साथ ये कार्बापीनम PBP के साथ मिलके और बैक्टीरिया सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं। तो इसकी वजह से ये एज ए रिजल्ट दीज 3 प्रॉपर्टीज द कार्बापीनम्स आर adept in gaining access to the periplasm, resisting destruction by beta lactamases that reside there and bind to the PBP to cause bacterial cell death। Resisting to carbapenem. Bacteria may produce resistance to carbapenem in 3 ways, or rather 4 ways. Four mechanisms are there to break. For example, the Pseudomonas aeruginosa can mutate. These result in loss of production of outer membrane porins used by carbapenems to get access to the periplasm। ये प्रोटीन में ही चेंजेस कर लेते हैं, इसकी वजह से वो एंटर नहीं हो सकते कार्बापीनम्स। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एफ्लक्स पम्प बाय बैक्टीरिया बाय लिमिट accumulation of the drug by पेरिप्लाज्मिक स्पेस। एफ्लक्स पम्प जो है इसको यूटिलाइज कर लेते हैं कि बैक्टीरिया एंटर होना ड्रग एंटर होना चाहते हैं, बैक्टीरिया उसको बाहर निकाल लेते हैं। एंटेरोकोकाई and methicillin resistant staphylococci produce altered PBP do not bind by carbapenems। कुछ बैक्टीरिया वो जो PBP है उसको चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से कार्बापीनम इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता। फोर्थ, फाइनली some bacteria have acquired the ability to produce extremely powerful beta lactamases that are capable of leaving carbapenems। कि कार्बापीनम्स को ये पावरफुल बीटा लैक्टेमेजेस आके और कार्बापीनम को डिग्रेड कर लेते हैं। अच्छा जी, कार्बापीनम्स have 4 types as already discussed: Imipenems, Meropenems, Ertapenems and Doripenems। तो ये हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जाएं कि एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी की क्या है, ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ भी है, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी है और एनारोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ भी। नंबर 1, अच्छा जी, Imipenems। Imipenems was first commercially available carbapenems in United States। Structurally, its legs are one side chain। It is rapidly destroyed in kidney because of the dehydropeptidase
एज ए रिजल्ट इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद द किलेस्टेटिन। ये ड्रॉबैक है कि ये एंजाइम के थ्रू डिग्रेड होते हैं किडनीज में, और फिर हम क्या करते हैं इसके साथ किलेस्टेटिन को कंबाइन करके तो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मोस्ट स्टेफिलोकोकस इंक्लूडिंग पेनिसिलिन रेजिस्टेंट pneumoniae strains are sensitive to this agent, और स्टेफिलोकोकस निमोनियाई के खिलाफ भी एक मतलब काम करता है, एंड आर मेनी स्टेफिलोकोकाई बट नॉट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई। मेथिसिलिन एमआरएसआई के खिलाफ भी काम नहीं कर सकता। इमिपेनेम हैव एक्टिविटी अगेंस्ट aerobic gram negative bacteria, for example Pseudomonas aeruginosa or Enterobacteriaceae के खिलाफ। It is among the most useful antibiotic in the treating infections caused anaerobic, however it is not active against deficits। कि मुख्तलिफ एनारोब्स के खिलाफ ये काम कर सकते हैं, डेफिसिल्स के खिलाफ काम नहीं कर सकता। Next is Meropenem. Structure of Meropenem differ from that of the Imipenems, and both are one and two side chains। इसमें डिफरेंस होता है, R1 और 2 साइड चेन जो है वो डिफरेंट होते हैं। Imipenems है methyl group 8 R1 side chain which makes the molecules resistant to cleavage by the renal dihydropeptidase। As a result, Meropenem does not need to be administered in conjunction with the cilastatin। अच्छा, तो ये मतलब ये किलेस्टेटिन के साथ जरूरत नहीं है कि इसके साथ हम देने किलेस्टेटिन। Meropenem's spectrum of activity is essentially the same as imipenem's. Thus, this agent also has excellent activity against gram-positive, gram-negative anaerobes and anaerobic bacteria. Doripenem is recently approved carbapenems. Like meropenem, it has a methyl group 8R1 and is not cleaved by renal dihydropeptidase। अब ये किसी और ड्रग की जरूरत नहीं होती। It differs from the other carbapenems 8R1 side chains, but in general it's similar to the imipenem and meropenem in its spectrum of activity. In vitro evidences suggest that Doripenem is associated with lower rate of emergence of resistance in Pseudomonas aeruginosa than other carbapenems, although the clinical significance of this finding remains unclear। ये मतलब डोरिपेनम जो है वो अच्छा है, एंटीबायोटिक है Pseudomonas aeruginosa के खिलाफ, लेकिन अब इस पे काम हो रहा है। Ertapenems also have methyl group 8R1 side chain, not cleaved by renal dihydropeptidase. It differs from the imipenem, meropenem, and doripenem. Its R1 R2 side chain, therefore distinctive antimicrobial and pharmacological properties। कि मतलब ये इन तीनों से कंपैरेटिवली अच्छा है और इसकी फार्माकोलॉजिकल और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज अच्छी हैं। It is less active against aerobic gram-positive bacteria, Pseudomonas aeruginosa, Acantobacter than other carbapenems। कि मतलब ये जो Pseudomonas के खिलाफ और Acantobacter के खिलाफ इतना एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, बीटा लैक्टम में फोर्थ नंबर मोनोबैक्टम्स, ये बीटा लैक्टम रिंग्स की एक और किस्म है। The term monobactam has been used to describe several bacterially active antibiotic that consist of alone beta-lactam rings as opposed to the two-ring structure of the penicillin, cephalosporin and carbapenems। ये carbapenems, cephalosporins और penicillin से ये डिफरेंट है कि इसमें एक रिंग होता है। Meropenem, the only commercially available monobactam, it kills aerobic gram-negative bacteria। अच्छा, it is available for parental use only, मतलब to injection दिया जाए। Ertapenem is totally synthetic monobactam that combines from some of the useful features of other beta-lactam antibiotics। ये मतलब ये एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देख लें इसमें डिटेल से, और हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। नेक्स्ट ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे इंशाल्लाह मज़ीद एंटीबायोटिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।